मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। I start this lecture with the name of Allah, who is most bountiful and merciful. So dear friends, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas Ahmed. I am studying chemical engineering at COMSATS University, Lahore campus. So I decided to deliver lecture through YouTube channel. It is the most important purpose of this channel is to deliver concepts behind the chemical engineering and industrial and technical interviews, VIVA questions and practical lab work. So first of all, do subscribe my YouTube channel and press bell icon for better and conceptual videos related to chemical engineering. So dear my friends, one of my friends who is from Nigeria, they were telling me to deliver lectures in English because English is international language, but some my friends from India and Pakistan who can understand easily in Urdu. So I decide to deliver lectures in English and Urdu because both language is important regarding to understand behind the concepts of chemical engineering. So today topic is very important, who is belong from other countries. So common interviews, questions and answers for chemical engineers, so industrial interviews and viva's question related to that. So first of all, first question is, what is flow control? What is flow control? Flow control mentioned as an optimized production technology where the effluent flow of material concentrated utilizing the production process. Bottlings are the main aspect that the flow control philosophy focus on. So you see in diagram, flow control is very important process. For example, example can be that the owner who makes use of the flow control process would never intend to purchase machines that have a capacity of 1000 units per hour and supply just 500. The system are to analyze and the lowest flow must identify. The identified point must address and assure that it works to its full capability. When the maximum productivity required, flow control play its role. So मैं इसको थोड़ा उर्दू में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. फ्लो कंट्रोल एक ऐसी डिवाइस है कि आपको मीन टू से आपको 1000 यूनिट पर आर आपको अगर फ्लो रेट आपका है तो उसको आप आगे सप्लाई करवाना चाहते हैं 500 यूनिट्स. तो अब हम फ्लो को हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं. फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं कि जो हमारी कैपेबिलिटी को इनहांस करती है और हमें जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है फ्लो कंट्रोल हमें उतनी ही देती है. तो इसका पर्पस, फ्लो कंट्रोल का ये पर्पस है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू. So second question, mention the difference between unit operation and unit process. I briefly describe the difference between unit operation and unit process in last lecture, lecture number 2. I also share link in description so we can understand from that video. But I describe simply way. Unit process are the chemical transformation or conversion. Basically unit process is called chemical conversion that are performed in a process. For example dehydrogenation, smelting, reduction, electrolysis. Electrolysis is a process who can identify the hydrogen. So you call electrolysis of water. What is a unit operation? Unit operation are physical treatment steps in chemical process which are required to put raw material in a form in which they can be reacted chemically and to put the product
in a form which is sustainable for the market. Basically, unit operation are called physical operation. So basically, unit operation change take place in mass and concentration where energy provided from an external source without any chemical change. For example, mixing, evaporation. Evaporation basically enhance the concentration of solute. So basically, these are the deeply concepts of unit process and unit operation. This is a very important interview question regarding to industrial interview. सो मैं थोड़ा इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो यूनिट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हमारा रिएक्टेंट जो है वो किसी रिएक्टर में जा रहा है, वो केमिकली आपस में क्या रिएक्ट कर रहे हैं और एक नई चीज हमारे पास प्रोडक्ट पर भी प्रोड्यूस हो रही है, इसे यूनिट प्रोसेस बोलेंगे. जिस तरह डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हमारे पास होता है, स्मेल्टिंग का होता है, रिडक्शन का होता है, कैल्सिनेशन का होता है. और यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है. ठीक है, इसमें हम मतलब कि हम इसमें कोई जो है केमिकल चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या करता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं और हमारा जो लिक्विड जो हमारा है वो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाता है. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा. केमिकल रिएक्शन की मैं एग्जांपल लूं यूनिट प्रोसेस की, तो हमारा जो होता है केमिकल, जो हमारा जो ऑक्सीजन हम बर्न करवाते हैं, जो हमारा केमिकल जो हम इसे बर्नर भी बोलते हैं, उसमें मीन टू से हम ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन बर्न हो रही है. किसी भी हम कोल की एग्जांपल ले लें, कोल और हमने ऑक्सीजन करवाई है, तो वहां से हमें क्या मिली है, एफ्लुएंट्स मिली है, फ्लू गैसेस मिली हैं. तो वो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यूनिट प्रोसेस होगा. उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है जिसमें मैंने डीपली ये बताया, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है. So third question is a very important question. What is a solvent? A solvent can define as a liquid that can suspend or dissolve or take out other chemicals where they do not perform any chemical change to the material of solvent. The main process of solvent is to clean, apply, processor to separate materials. So basically what is a solvent? So easily you can understand from a figure, a liquid extraction. So feed enter in this way and a solvent enter in this way. So this is a extraction process. So basically what is the extraction process? Feed is entered and solvent is entered. So what is the purpose of solvent? To extract the required solute. So feed is consist of solute and carrier liquid. What is the purpose of extraction process? To separate solute from feed with the help of solvent. Solvent do not chemical react with the feed, but it useful to separate solute from feed. What is the actual product is extract. So आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं. हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक ऐसा प्रोसेस है, सॉल्वेंट एक ऐसी हमारे पास लिक्विड हम कह सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज अ लिक्विड, जो डिसोल्व नहीं होगा, हमारे फीड के साथ डिसोल्व नहीं होगा. इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम सॉल्वेंट को फीड में डाल रहे हैं, फीड से ऐड कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, तो सॉल्वेंट की मदद से हम फीड में से जो हमारा सल्यूट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम सॉल्वेंट की वजह से हम उसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट. लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज, डू नॉट परफॉर्म एनी केमिकल चेंज टू द मटेरियल और सॉल्वेंट. द मेन प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इज टू क्लीन, अप्लाई, processor to separate material. What is the purpose? Separate the material. Fourth question is very important. What is material requirement planning? When the number of finished goods provided it requires an appropriate quantity of raw materials and related components to make them.
computerized tool that used to handle at times material order to supply a later date called material requirement planning system. So when output quantities now the MRP is effective. There are several small businesses owner these days that have their MRP system. In this way, they store the information required and supply production. Few MRP activities are forecasting demand and computer tracking inventory. So what is a material requirement planning? Material requirement planning, so we easily understand from figure, material planning, inventory stages and reporting the product is work orders and purchase orders. So basically, what is the purpose of material requirement planning? Computerized tools that used to handle at times material order to supply a later date called material requirement planning system. सो बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग? ये हमारा इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इस वे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को हमने सप्लाई करनी है इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं. इसमें हमारा MRP जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक्टिविटीज यूज होती हैं जो हमारी एक्चुअली कंप्यूटर ट्रैकिंग इन्वेंट्री है. हम कंप्यूटर की हेल्प से हम ये सिस्टम को हम जो है अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. When the number of finished good provided, it requires a quantity of raw materials. हमें से पता चल जाता है कि हमें जो है हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए अपनी रिएक्टेंट की और जो हमने ऐड करनी है. सो बेसिकली इट इज द पर्पस ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. Question 5 is very important. What are PCBs? So easily you can answer. The abbreviation for PCBs polychlorinated biphenyls and is mainly utilized for disposal issues, usually in the chemical industry. So day to day PCBs challenges are used. PCBs can be found in everyday products में use होती है. So can use in paints and printers ink, old fluorescent light bulbs, lubricant, hydraulic fluids and pesticide. So basically it is a purpose of disposal issue. Mean to say you can dispose the paint, you can dispose the paint and printer inks. You can easily use polychlorinated biphenyls. So sixth question, what are the design considerations for a piping system to transfer slurries? The point considered to design a pipe to transfer slurries mentioned the pipe should have the capability to self-drain. In the case where self-drain is not possible manually, draining facility should be installed. So the other point to mention is that when plugging opportunities are high, blowout or rode out connections must be provided to clear the lines. Clean out connections must install on both the side of the values for proper flushing. Assess flanges must make use of T connections. Flange connections must provide to all manifolds for easy usage. If you deeply learn or study this about this question, I recommended you this book, Engineering Piping Design Guide, Fiberglass System. You can easily understand the deeply concept from this book. So basically ये है क्या, डिज़ाइन कंसंट्रेशन पाइपिंग सिस्टम की. अब हमने इंडस्ट्री में कोई स्लरीज को, कोई फ्लूइड को हमने पाइप में क्या करवाते हैं, हम उसे फ्लो करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसे, ठीक है. तो अब हमने पाइप को ऐसा डिजाइन करना है कि उसके अंदर सेल्फ ड्रेन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उसमें जो हमने ड्रेन इज नॉट पॉसिबल, मैनुअली ड्रेन फैसिलिटी शुड बी इंस्टॉल्ड. अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है कि ड्रेनिंग का मसला वहां पे आ जाता है तो आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो कि हम उसे मैनुअली भी उसे हम काम में ला सकें. सो ये है डिजाइन कंसिडरेशन फॉर अ पाइपिंग सिस्टम टू ट्रांसफर
स्लरीज। सो आपने यहाँ पे टी कनेक्शन लगाने हैं, फ्लैंजेस लगानी हैं, जो आगे इसमें हमें इसमें पाइपिंग सिस्टम में हेल्पफुल हमारे साबित हो, मतलब हमारी लाइंस क्लियर होनी चाहिए, हम ऐसी डिजाइनिंग करें इसमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन when interviewer asks about the third law of thermodynamics. So according to third law of thermodynamics, we can zero the entropy of any system, but that system should be crystalline solid and temperature should be absolute zero, mean to say minus 2273 degrees Celsius. At absolute zero, any entropy of system will be zero. So you can easily understand through these figures, when you increase the temperature, entropy mean to say disturbance in molecules increase. So when you decrease in temperature, then kinetic energy of molecule decrease. When you more decrease in temperature, then more decrease in kinetic energy. At minus 273.15 degrees Celsius, mean to say absolute zero, then zero kinetic energy, mean to say that at absolute zero, kinetic energy is zero and entropy is zero. According to third law of thermodynamics, when a system reaches absolute zero, a minimum value is reached by the entropy of a system. So in a universe attain absolute zero, it is a very difficult, it is not possible to freeze the molecule of any substance, even perfect crystalline solid. When perfect crystalline at absolute zero will have zero entropy. तो मैं थोड़ा इसको मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स बहुत ही बाउंड हो जाएंगे। जो हमारा फिजिकली जो इन यूनिवर्स पॉसिबल ऐसा नहीं है कि हमारी जो जीरो एंट्रोपी हो, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, हम इसे थ्योरेटिकल भी हम कहते हैं कि एट absolute zero the entropy of the system will be zero. So ये हमें कहता है third law of thermodynamics. So question number 8 is very important. What is just in time, also called JIT? JIT is a system of inventory management with an approach to have a zero inventories in stores. Inventories mean to say any materials, any raw materials. According to this approach, material should only be purchased when it is actually required for production. GIT is based on two principles: produce goods only when it is required. The products should be delivered to customers at the time only when they want. So product management philosophy which develop across continuous reduction of waste called lean manufacture. Wasted many odds, reduction of inbound inventory by a formulation of supplier delivery schedules, minimization of outbound stock, and more are few techniques that exist JIT. In this way, cash flow enhance and the sales margin maximize. सो इसको मैं उर्दू में आपको बयान करूं तो इसका जो है व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम ये है, जीआईटी इसे हम बोलते हैं कि हमारा जो अब मीन टू से हमने एक स्टॉक रखा हुआ है, एक जगह पे हमने अपना जो है रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो हम रॉ मटेरियल को जो है हम इन्वेंट्री हम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई डिमांड आ गई है कि हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो तब ही हम उस मटेरियल को वहां पे लाएंगे और वहां पे स्टॉक करेंगे, मतलब हमने इस मटेरियल को स्टॉक करके नहीं रखना हर वक्त। इसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम JIT, कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट हमारे पास आए, हमने बनानी है, तो तभी हम जो अपना रॉ मटेरियल ला के वहां पे रखेंगे, इसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम JIT. So next question, when interviewer asks what is a quicklime and what are its uses? Quicklime is calcium oxide CaO, commonly known as quicklime or burnt lime, is a widely used chemical compound. It is a white caustic alkaline crystalline solid at room temperature.
So how quicklime is formed? When limestone and chalk calcium carbonate is burned in the kiln, it turns into quicklime, calcium oxide, and release carbon dioxide. Water can be added to burnt lime or quicklime to produce hydrated lime, calcium hydroxide. So quicklime is in dehydrated stage and an effective material. When a comparison made with other materials such as silica, it is cheap. These usually found in water sensitive paint formulation. So quicklime uses making mortar, manufacturing glass, treating wastewater. So quicklime has a wide range of uses, including in the production of iron and steel, paper and pulp production, treatment of water and flue gases, and in the mining industry. For the iron and steel industry, we also supply different fractions of both reactive shaft, furnace, burnt and hard burnt rotary kiln lime. तो हमारे पास क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, जो हमारा यूज होता है केमिकल कंपाउंड में. एक वाइट कॉस्टिक अल्कलाइन मटेरियल है, सॉलिड है, एट रूम टेम्परेचर पे. हमारा लाइमस्टोन जब हम बर्न करते हैं किसी भी किल्न में, हम रोटरी किल्न में हम जब करते हैं तो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है. जब हम ऐड करते हैं, जब क्विक लाइम को टू प्रोड्यूस वाटर ऐड करते हैं जब, तो हमारे पास हाइड्रेटेड लाइम बन जाती है, जिससे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. और जो क्विक लाइम जो है, ये प्रोडक्शन ऑफ आयरन, स्टील, पेपर, पल्प प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में एंड फ्लू गैसेस एंड इन द माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होती है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरव्यूअर आस्क अबाउट द व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज importance in the chemical industry. Angle of repose is a property of particulate solids. You see in these diagrams, a conical pile is formed when a bulk solid is poured onto a flat surface. Angle formed, this is the angle formed between the pile edge and the flat surface is known as the angle of repose. What is the angle of repose? Angle of repose between the pile edge and the flat surface is known as angle of repose. Angle of repose depends on the below factors. Number 1, surface area. Number 2, density of the material. Number 3, coefficient of friction of the material. A material having a low angle of repose will always create float piles as compared to materials with a high angle of repose. This is used in designing of equipment that are used for particulate solids. Additionally, this angle can be used to calculate the size of conveyor belt that is used to transfer the material. सो मैं आपको उर्दू में बताना चाहता हूं कि हमारा एंगल जो है, रिपोज एंगल क्या होता है. ये जब हम किसी भी अपने मटेरियल को, ठीक है, सॉलिड्स को हम कोनिकल पाइल में जब हम बल्क सॉलिड को पोर करते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस में, तो जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल किनके दरमियान, जो हमारी फ्लैट सरफेस है और जो हमारी इसमें पाइल एज है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. और एंगल ऑफ रिपोज किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल, कि हमारे मटेरियल के सरफेस के साथ कितनी फ्रिक्शन है. अब ये चीजें कहाँ पे यूज होंगी? ये हमारी जब हम कन्वेयर बेल्ट जो हमारे मटेरियल को ट्रांसफर करता है, वहां पे ये एंगल ऑफ रिपोज यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में. और ये डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट में यूज होता है, दैट आर यूज फॉर पर्टिकुलर सॉलिड्स में यूज, कैलकुलेट द साइज ऑफ कन्वेयर बेल्ट, वहां पे हमारा ये केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज है. तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज थ्रू दीज फिगर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन is what are the three classes of organic solvents? Organic solvents are usually classified as hydrocarbon, oxygenated and halogenated solvents.
They also take into account ketones, alcohol, esters, and glycol ether esters. When hydrocarbon solvents considered, they include aromatics and aliphatics. Chlorinated ones usually fall under halogenated solvent. So basically, organic solvents are classified by their chemical structure into three main types. One is hydrocarbon solvents. You already learned this concept in your previous classes, aliphatic and aromatic. What is aliphatic and what is aromatic? Oxygenated solvents, alcohols, ketones, aldehydes, glycol, and halogenated solvents, chlorinated and brominated hydrocarbons. These are the concepts of unit process you already discussed in your previous classes, elementary या higher secondary schools. सो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स होते हैं, हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट जिसे हम एलिफेटिक एरोमेटिक बोलते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो जिनके साथ कार्बन अटैच होता है. हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो ब्रोमिनेटेड और क्लोरिनेटेड, मतलब कि हमारे पास क्लोरीन अटैच होता है हाइड्रोकार्बन के साथ. तो ये हमारी क्लासिफिकेशन. अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरह आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. In this slide, you learned about the classes of organic solvents. So question number 12, when you are interviewer ask about what do you understand by wet bulb globe temperature. So wet bulb globe temperature, WBGT, is a type of apparent temperature used to estimate the effect of temperature, humidity, wind speed, wind chill, and visible and infrared radiation, usually sunlight. So wet bulb temperature is used to estimate the effect of temperatures on environment, on humans. It is used by industrial, hygienists, athletics, sporting events, and the military to determine appropriate exposure levels to high temperature. You can easily understand with this figure. So one of the student who can measure the effect of temperature, humidity through this equipment, wet bulb globe temperature. So it was in the 1950s that the wet bulb globe temperature developed and now agree as an international standard. Their temperature readings take into consideration, which include ordinary dry bulb temperature, wet bulb temperature, and black bulb globe temperature. सो बेसिकली WBGT क्या चीज़ है? WBGT जो हमारा, हम इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसका इफेक्ट जो है हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो हम इस इक्विपमेंट की मदद से हम वो फाइंड एस्टिमेट कर सकते हैं. तो ये था हमारा वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर, WBGT. So this question is very important. What is Gibbs free energy? It mentions as the maximum amount of mechanical work or available energy which done by system under stable temperature and pressure. So Gibbs free energy is the maximum amount of energy available to do useful work. So delta G is equal to delta H. Delta H mean to say useful energy, and T delta S mean to say energy loss due to disorder, mean to say entropy. So if useful energy is greater than energy loss due to disorder, reaction is spontaneous. So Gibbs free energy also gives the information about reaction is spontaneous or non-spontaneous. Spontaneous case is that when useful energy is greater than energy loss due to disorder, so reaction is spontaneous. When useful energy is less than energy loss due to disorder, reaction is spontaneous. So basically Gibbs free energy हमारी क्या है? ये हमें बताती है कि maximum amount of available energy.
ये हमें ये भी बताती है कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके बारे में बताती है। और रिएक्शन और जिब्स फ्री एनर्जी हमें ये भी बताती है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स रिएक्शन जा रहा है। So very important concept behind the Gibbs free energy. Gibbs free energy gives us information that reaction is forward or reverse. So next question is that what happens when the paint dries? So very important and easy concept. In the manufacturing process of paints, solvent added to them so that paints thinner prepared. This solvent used to apply to different surface. After the application of the paint, solvent evaporates and the pigments and resins make the paint form a solid and thin coating on the surface. Mean to say, this is like the behavior of liquid extraction. Solvent is play important role to apply the application of paint, and pigments and resin make the paint form a solid and thin coating on the surface and solvent evaporates. सो बेसिकली होता क्या है, जब पेंट में बेसिकली सॉल्वेंट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। अब सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि कोटिंग जो हमने की, हम उसमें पिगमेंट रेजिन जो दीवार पे जो अच्छे तरीके से कोट हो जाए और वो सॉल्वेंट जो होता है हमारा एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हमारा पेंट जो है वो ड्राई होता है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी पेंट ड्राइज। 15th question is that can you mention something about additives? Additives mentioned as something that mixed with any process. This mentioned as the primary staple. They identified in very small quantities are not associated with any means to the terminal output. They mainly use as an enhancer to avoid some unwanted reactions. Simple example can be addition of reaction, evaporators and more. So basically food additives to avoid forming styrene system added with inhibitors to avoid polymerization. A flame additive, the detergent mixed with gasoline and motor oil so that the engine keeps clean. So example of food additives, substances we add to food to make them taste better and last longer and look nicer. So this is the application of additives in the food additives. Natural, identified, artificial. You can easily read this in that video. सो एडिटिव्स क्या होता है? एडिटिव्स की हमने एग्जांपल बताई कि हम इसे मिक्स कर देते हैं किसी प्रोसेस के साथ, वो हमारा प्राइमरी स्टेपल होता है। हमने फूड एडिटिव बताई कि फूड एडिटिव में क्या होता है, हम उस सब्सटेंस को फूड में ऐड करते हैं, वो टेस्ट उसका बेटर हो जाता है। और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताई कि दे में मेनली यूज एज अ enhancer to avoid some unwanted reactions, some as addition of reactions, evaporators and more. सो हमारा ये क्या करता है, अनवांटेड रिएक्शन से अवॉइड करवाता है। हम एडिटिव इसलिए डालते हैं कोई हमारा जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं है वो हमारा वहां पे कहीं प्रोड्यूस ना हो जाए, तो इसलिए हम ये एडिटिव्स को ऐड करते हैं। So next question is very important. How particle size distribution determined for a given bulk solid? Making use of sieve stack is the simplest method that can utilize to find out the particle size distribution by making use of varied mesh size stack develop at every stack level. So already we discussed in lab what is sieve analysis. Through sieve analysis we can distribute the size of bulk solid with mesh size like 200 nanometer at etc. So the structure formulated in a manner that the largest mesh size reside on the top and the smallest at the bottom, with the pattern, the weight before beginning and other values made note of. With all these setups, the topmost cylinder is where a solid place. Now without disturbing the setup exposed to vertical and horizontal movement. The process here is that solid made to pass through varied mesh sizes where particles separated according to their size.
to determine the size of the particle and distribution. Advanced methodologies such as laser diffraction, video imaging can utilize. सो हमने देखा कि हमने लैब में भी इस्तेमाल किया था, ठीक है, जो हम सीव एनालिसिस करते थे मैश साइज के थ्रू, कि हमारे मैश साइज के थ्रू हम क्या करते थे, हमारे जो थे पार्टिकल्स कुछ ऊपर आ जाते थे, कुछ वो सीव में से पास कर जाते थे, मतलब 200 नैनोमीटर का पार्टिकल है तो उस पर रिटेन कर जाएगा, उससे छोटा है तो वो नीचे आ जाएगा। तो हम ये सीव एनालिसिस हमने की हुई है, उसके थ्रू हम बल्क सॉलिड को हम उसकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस मेथोडोलॉजीज हैं उसमें लेजर डिफ्रैक्शन है, वीडियो इमेजिंग है, वो लेटेस्ट चीजें आजकल यूज हो रही हैं। So next question is, what is an isochoric process? Isochoric process is a thermodynamic process taking place at constant volume. What is a thermodynamic? Thermodynamic means heat in motion. When we provide heat in cylinder, so iso means same, equal, constant. Choric means space volume. So isochoric is also called isovolumetric process. So what is the concept behind the isochoric process? This is the cylinder. When we apply the heat uh, through candle, through burner, the volume is not changed, but we provide heat, then intermolecular forces and internal energy increase, and molecules pressurize, and pressure of internal energy is also increase, but volume is not increase, volume is fixed. So this process is called isochoric process. आइसोक्रोरिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, हम हीट प्रोवाइड करी जाए तो उसमें इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो द मेन फंक्शन ऑफ द थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर आर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन and uncombusted hydrocarbon oxidation. So this is called oxidation and reduction process. So we enter the CONO2 in the chamber. So what is the reaction held in this chamber? Two reaction held. One is oxidation and second is reduction. So this is also called oxidation and reduction process. So next हमारा जो 19 क्वेश्चन है, what are the disadvantages and advantages of PFR? What is PFR? PFR is plug flow reactor. In the PFR, the flow of fluid through the reactor is orderly with no element of fluid overtaking or mixing with any other element ahead or behind. Actually, there may be lateral mixing of fluids in a plug flow reactor. So what is a plug flow reactor? Figure you can easily understand. The advantages of PF are highly conversion rate, continuous process and operating at less cost. The disadvantages of PF are at high maintenance cost and temperature gradient, because in the elements not over mixing with any other element ahead or behind. Actually there may be lateral mixing of fluids in a plug flow. This is the concept behind the PFR. So next question is, what are the characteristics that affect the flow of bulk solid and how? A few characteristics that affect the flow of bulk solids are moisture contents, where the enhance the moisture content in solids make bulk solids sticky. Absorption of the moisture sometime by the atmosphere by some solid happens. So basically इसमें होता क्या है, ये हमारे
कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट करती हैं बल्क सॉलिड के फ्लो को? ये हमारी जो मॉइस्चर आ जाता है, नमी, वो हमारे फ्लो को जो है सॉलिड के फ्लो को जो है वो कम कर, उस पर अफेक्ट कर सकती है। मॉइस्चर हमने इनहांस कर दिया है कंटेंट में इन सॉलिड में, तो वो हमारे बल्क सॉलिड में क्या करेगा, स्टिक हो जाएगा वहां पे। तो ये हमारी इफेक्ट्स होते हैं फ्लो ऑफ बल्क सॉलिड में। So next question is, what is a CSTR and what are the its basic exemption? So next question is, what is a CSTR and what are its basic exemption? The abbreviation for CSTR is a continuous stir tank reactor. So this is called continuous stirring in the tank reactor. Here exemption are steady state. Steady state mean to say in and outflow is equal. Input is equal to output is called steady state. Constant temperature, constant density, and one irreversible first order reaction. So basically you remind the basic assumption. What is a steady state? Steady state mean to say input is equal to output, okay, and constant temperature is not change, constant density will not change, and one irreversible first order reaction. So what is CSTR? Is called a continuous stir tank reactor. So next question is very important. What means by global warming in the engineer's perspective and the common man? When a common man perspective consider the things that global warming is the rise in the world temperature, the average temperature enhancement at the surface of the earth, mentioned as global warming by an engineer's view. This is because of enhanced effect of greenhouse gases. The greenhouse gases are ones that capture heat emitted by the global into the atmosphere which leads to temperature rise. तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की होती है राइज इन टेम्परेचर की वजह से, जो हमारे ग्रीन हाउसेज गैसेस पे, ये हमारा इसका कॉजेज और इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट है 23, लिस्ट द ग्रीन हाउस गैसेस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। फ्यू ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर वाटर वेपर, मीथेन CH4, carbon dioxide CO2, nitrous oxide, and CFC. So very important is a carbon dioxide CO2 in a 56.4%, methane 16.3%, ozone 10.2%. So these are the greenhouse gases found in the earth atmosphere. So next question is, what is carbon sequestration? What is a carbon sequestration? Carbon sequestration, a methodology for the sizing carbon dioxide for the long term so that its effects on global warming reduce. So what is the purpose of carbon sequestration? So that effect on global warming reduce. So the removal and storage of carbon, usually in the form of CO2, from the atmosphere into carbon sinks through physical or biological process is called carbon sequestration. So next question is a very important. Define the octane number. Octane number is important in petrochemical industry. So how we enhance the octane number of petrol? By hydrodesulfurization, so removal of sulfur. An octane number defines as a resistant to an explosion of fuel, especially in spark engine ignition, when made a comparison with the isooctane and heptane mixture. So what affect the number of octane? Octane number decrease with an increase in the carbon chain length. Normal paraffins have low octane number and these become lower as the molecular weight increase. So octane number increase with carbon chain branching.
isoparaffin have high octane number than the correspond noble. When we decrease the carbon chain, then we increase the octane number. Higher octane number mean to say good fuels. So next concept is very important in heat transfer operation and chemical engineering. What is the critical radius of insulation? So when the convection resistance not affected due to depth of insulation, then it mentioned as a critical radius of insulation. Critical radius of insulation means the maximum heat loss is that point when maximum heat lost in the pipe to the insulation. A critical radius concept is used when you insulate the pipe with wool, when not energy transform to outer from insulation. So critical radius is that point when heat loss at the maximum and peak value. सो हमने जो क्रिटिकल रेडियस हमने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में पढ़ा था, हम इससे इंसुलेशन, हम पाइप को इंसुलेशन करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. अब क्रिटिकल रेडियस होता क्या है, हम पाइप को जब हम रैपिंग कर रहे होते हैं, इंसुलेट कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे हमारी मैक्सिमम हीट लॉस हो रही होती है. अब वहां पे मैक्सिमम हीट लॉस हमारी क्यों हो रही होती है, ड्यू वहां पे हमारा कन्वेक्शन जो है वहां पे डोमिनेंट होता है. अब जब हम इंसुलेट कर ही जाते हैं तो हमारी वो जो होती है वो कन्वेक्शन हमारा डोमिनेंट नहीं होता, वहां पे हमारा कंडक्शन डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पर हीट लॉस नहीं होती. तो जो उससे पहला पॉइंट जहां पे आएगा, जहां पे हीट ज्यादा लॉस होगी, हम उसे क्रिटिकल रेडियस हम बोलेंगे. और हम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्रिटिकल रेडियस defines that means that you increase the insulation and greater than the critical radius. So it's a very important point. So next question is, what is a black body? A black body considered an ideal object that absorb all electromagnetic radiation. These are few interview questions and answers especially for chemical engineers. The higher the object temperature, the faster the molecule will vibrate and the shorter wavelength will be. So very important concept, when you higher the body's temperature, the faster the molecule will vibrate and shorter the wavelength. So black body indicates about the wavelength and temperature relation. What is a black body? Black body is an ideal object that absorb or emit all electromagnetic radiation. This is a very important concept. So graduates who are about to attend a chemical engineering interview can run through these questions and answer and will be benefited. So thanks for watching my YouTube channel. I hope this video is very helpful for you and your friends. So please subscribe my YouTube channel, promote it and motivate me to make videos for you. Share with your class fellows called chemical engineering family and your friends and increase subscriber family. Please subscribe my YouTube channel and share with friends. Next time I made video on heat transfer operation interviews, basically design in industry like Descon industry. So if you any query, then ask me in comment section. I will reply immediately because I share concept with you. Thanks a lot. Thanks for watching my YouTube channel. I am very happy to deliver this lecture because conceptual chemical engineering is the first purpose of our educational institute. So this video is consists of common interviews question and answers for chemical engineer. So hopefully we enjoyed this video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.